So hello children, welcome back to my YouTube channel Visual Coding. In my last video, we learned about the series data structure. Now today, we will understand the concept of data frame, right? So as we seen in the last video, that series is one-dimensional database. So I will give you the points. Sorry, I'll give you the points to remember. Data frame, data frame is a two-dimensional. Okay, it's a two-dimensional data structure. There's a clear difference between the series and data frame. Yeah. So data frame, it's showing spelling wrong because data and frame, it's a separate word, but this word does not exist in dictionary. That's why it's there. Okay. Moving to the next point. Data frame, क्या है? The second point, let's make it bullet so that point will be remembered to you. The second point that it is heterogeneous. Okay. So what's the meaning of heterogeneous here? It means variety of information we can store in one data frame. Like we can have integer number, we can have float, we can have string or anything else. Whereas in series, if you remember, it was homogeneous. So this is the second big difference. And the third, that it is, if you remember, the last point, mutable and immutable property of data frame. It means the value can be changed. Okay, it is value mutable and size mutable, both. So you can change the size, you can change the value both at any point of time at runtime also. This is what the basic data frame, it's a data structure. Okay, so generally in exam it may ask sometime about the difference also, so we should aware about it. Now let us understand. I'm switching to my Python screen and let us understand how we create data frame. Okay, so this was the program of series which we did last time. These are the list slices and list functions, list, no, series functions. Now today we will continue with the data frame. So very first we will understand how we create a data frame and how it look like. So to create data frame we require same pandas library. Say import pandas as p. The p, again I'll give you reminder, p is just a variable. You can take x, y, z, any. Fine. So there are several ways to create dictionary. That's why it's a whole heterogeneous. We can create a data frame with dictionary. We can create data frame with list also. Let's understand. First, I'll guide you about to create dictionary and with data frame with dictionary. Okay, let's see. So D equals to, we all know that dictionary consists of key value pair. Okay, key value pair. So I'm going to create a dictionary with the name. So name is say Ramlal. Okay, we have several names. Harsh and say Kamal. Okay, so child, you understand this is a key and the three Ramlal, Harsh and Komal are valid. Okay, so dictionary consists everything in the form of key value pair. So this is first key value pair. Let's class second class
So suppose Ramlal is in class 11, Harsh is in class 12, Kamal is in class 11 again. Now, say city. Okay. Say Ramlal belong to Delhi. Harsh, we require the square bracket. Say from Jaipur, and let's say this Kamal is from Agra. Okay, any you can take. So this is how I've created a dictionary. So a dictionary consists of key value pair, but the data is in non the form of data structure. Now, how to convert this into data structure? Now, suppose data frame, say variable df, any variable can be taken equals to p dot data frame. Remember D capital, F capital, and the bracket D. Yeah. So this is converted dictionary is now getting converted into the data frame. Let me see how the output will look like. Now my data frame is ready. I'm going to execute the program. Yeah. Okay. I hope my output screen is visible on the right side. See. So name, class, city, and you can see this is a two-dimensional data structure because we have rows, we have column both. And see, by default, the index are also displayed here. I have not assigned any index, but by default, the index are there just like series 0, 1, 2. Okay, these are default index value. If you want, you can have your own index also. Let's take one variable, say x equals to a, b, c, and there we'll write index equals to x. Fine. Now the index, you can clearly understand here. The moment I define index value ABC or any other PQR of my choice, the index will display. Otherwise, by default 0, 1, 2 will be there. Now each row will be identified by ABC also and by 0, 1, 2 also. I can work in both the way that we will see into the upcoming program. फाइन, ठीक है. ये एक तरीका था हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट करने का. बट डेटा फ्रेम को हम कई तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. तो नाउ आई विल गाइड यू द सेवरल वे, बिकॉज एग्जाम में वो किसी भी तरीके से आपसे डेटा फ्रेम पूछ सकता है. तो ये एक वे था. नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट कमेंट so that the other output you can understand clearly. Now this is comment. Okay, let us see another data frame. How do we create? There is another way to create data frame. Same data frame I'll create in the by other way. Okay, same. Okay, x equal name. I'm creating the database and now data frame row wise. The first row is of Ramlal. This is one key value pair. Class, okay, for integer value there is no necessary to give a single quote or double quote. And the third is say city, and city is from Delhi. This is another way. Okay, let me complete the another two variables more, two more rows. So again
name, Jaipur, fine, then another z equals to name. So this is a long method, right? Let me finish with it. Class, and then city. Okay, here's Pamal. What we do, city equals to, we'll create list x comma y comma z, and then df equals to p dot data frame, and so print the, fine. Let us execute this because the previous one is common. Fine. So child, you can see I have created the similar data frame. बिल्कुल same है, but the way is separate. This is also dictionary. Basically, X, Y, Z is also a dictionary. But this is quite little long. Fine. But ऐसा नहीं कि ये बेकार है, because there are certain conditions जहाँ पर हमको डिक्शनरी को merge करना है, update करना है. We use this also. But the first way is, I think, the short and the easy way to create the data frame. Fine. So there are two ways we have learned to create a data frame. We will learn another way. There is one more way to create a data frame. Let us see that also. Now what I'm going to do, we'll create the comment of this also. इसको भी हम comment बनाते हैं. Fine. Fine. Okay. So D variable can be anything. Okay. Don't be confused कि मैं every time D ले रहा हूँ तो शायद D ही लेना होता है. ऐसा कुछ नहीं है. अब हम देखेंगे प्योर लिस्ट फॉर्म में कैसे हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं. तो पहले मैं हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट करने का एक और तरीका है. हमने लिखा रामलाल हर्ष कमल. So 11, 12, 11. Delhi, Jaipur, frame, data frame, and D. Let us print D. Okay, let us execute the program. Fine. I have created data frame, but this is also a way, though the data frame is not in the data frame is not in the similar way. But ये भी एक तरीका है जहां पर हम डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. मैंने सारा की वैल्यू एक साथ देना था, वो चेंज हो गया है. एक्चुअली द फर्स्ट ब्रैकेट शोज, चलिए मैं सिमिलर कर देता हूं इसको. फर्स्ट ब्रैकेट शोज द फर्स्ट कॉलम, नो इश्यू. सो रामलाल is in 11
and is from Delhi. Okay, second was the Harsh, is in 12th class and is from Agra. And the third is Kamal, is in 11th class and from, I think he is from Agra. चलिए no problem, city आप चेंज कर सकते हैं खुद से. Run the program. Okay, fine. तो आप देख सकते हैं in this case I have created another data frame. और ये तीनों मेथड को समझना बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट हमने क्रिएट किया डायरेक्टली विद डिक्शनरी, सेकंड हमने क्रिएट किया विद डिक्शनरी बट विद द सेपरेट वेरिएबल, यू कैन से इट इज रो वाइज, एंड थर्ड में हमने प्योरली लिस्ट को यूज किया टू क्रिएट द डेटा फ्रेम, अगेन द डेटा फ्रेम क्रिएटेड रो. लेकिन एक डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस है कि यहाँ पे कॉलम का नाम 012 आ रहा है बजाय कि नेम क्लास सिटी के. तो ये क्या है, देखिए नेम क्लास सिटी द वैल्यू की वैल्यू पेयर हमने दिया था. फाइन. बाय डिफॉल्ट कॉलम इंडेक्स आर आल्सो देयर, दैट इज आल्सो 012. तो अगर आप कॉलम का नाम लिखें या कॉलम इंडेक्स दें, दोनों केस में रेफर सेम चीज होगी. तो ये तीन मेथड हमारे डेटा फ्रेम क्रिएट करने के हैं. अब बात आती है कि बेनिफिट क्या है, हम डेटा फ्रेम में कैसे फंक्शंस को और किस तरह से हम स्लाइसेस को यूज करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. सो आई विल टेक द सिमिलर डेटा फ्रेम. यस, तो देखिए अब हमारा सिमिलर डेटा फ्रेम है, मैं इस फॉर्मेट को उठा रहा हूँ. अब हमारा क्वेश्चन जो है वो ये नहीं रहा कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे होता है. हमने डेटा फ्रेम क्रिएट करके देख लिया और हमने थ्री वेज से डेटा फ्रेम को क्रिएट करना समझ गए. नाउ इन द नेक्स्ट वी विल लर्न द फंक्शंस बेस्ड ऑन डेटा फ्रेम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट जो कल हमने किए थे, df dot index similar function. द सिमिलर फंक्शन देखिए क्या करेगा, df dot index, दिस इज द आउटपुट. ये देखिए क्या किया, ओनली इंडेक्स, रिटर्न द इंडेक्स बट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. ये हमें ध्यान रखना है कि आउटपुट कैसे आ रहा है. सो आउटपुट वाज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट बट ओनली इंडेक्स. ये हमें ध्यान रखना है खास तौर पे कि आउटपुट किस फॉर्मेट में आ रहा है. ओनली एबीसी लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको उसको प्रॉपर लिस्ट फॉर्म में दिखाना होगा. नाउ वैल्यूज, करेक्ट. क्या वैल्यूज कुछ करेगा, देखते हैं क्या करेगा. वैल्यूज भी हमको आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, बट सी द आउटपुट. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड, वैल्यूज ने हमको आउटपुट दिया, सारी की सारी वैल्यू केवल आई हैं लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ लिस्ट. आप देखिए पूरा का पूरा नेस्टेड लिस्ट फॉर्म में आउटपुट है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है. द आउटपुट इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, ये हमें याद रखना है, इन द नेस्टेड लिस्ट. नेक्स्ट फंक्शन प्रिंट. साइज, अगर आपको याद हो, df डॉट साइज. तो साइज ने क्या किया था, ये देखिए कल हमको जब हमने साइज किया था लिस्ट की केस में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किए थे, राइट.
यहाँ पे भी काम वही है, देखिए जो फंक्शन सीरीज में जो काम कर रहे थे वो यहाँ भी वही कहेंगे। मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास इन दिस डेटा फ्रेम वी हैव 9 एलिमेंट, देखिए 3 3 6 3 9, so that's why the output is 9. So size function returns the number of element. अब आते हैं नेक्स्ट इन सिमिलर फंक्शन shape। अगर आपको याद हो कल हमने शेप फंक्शन किया था और शेप फंक्शन ने हमको रिटर्न किया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच डायमेंशन। बट सिमिलर चीज आई थी, अगर आपको याद हो तो वहां भी आया था 6 कॉमा टपल फॉर्म में हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न किया था, राइट। शेप नहीं, यहाँ पर भी वही हो रहा है, देखिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टपल फॉर्म, यहाँ भी वही हो रहा है, लेकिन डेटा फ्रेम है, इट्स अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई 3 3 इट मींस द 3 रोज एंड 3 कॉलम आउटपुट में हमें आ रहा है। याद रखिएगा आउटपुट में जो फर्स्ट नंबर है 3 दैट इज रिप्रेजेंट्स रो, एंड सेकंड जो हमारा नंबर है 3 वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। अगर हम मूव करें नेक्स्ट फंक्शन की ओर को, तो आप याद करिए हमने किया था एनडिम, df डॉट एनडिम नंबर ऑफ डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन। तो ये 2D डेटा फ्रेम है। आप याद करिए सीरीज में द आउटपुट वाज 1, बट यहाँ पर आएगा 2 बिकॉज इट्स अ 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम। ठीक है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन df डॉट टी। देखिए टी क्या करेगा, ये बहुत अच्छा फंक्शन है। टी फंक्शन आपको ट्रांसपोज कर देगा, यानी कि इट विल कन्वर्ट रो इनटू द कॉलम। ये देखिए T stands for transpose, I'll write it transpose। जो बच्चे मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में उन्होंने पढ़ा होगा ट्रांसपोज, कन्वर्ट रोज इनटू द कॉलम, कॉलम इनटू द रोज। Sometime this question asked in the form of output in exam, so remember T stands for transpose और आपको रिटर्न करेगा रोज इनटू द कॉलम, इंटरचेंज करके देगा। एक लास्ट फंक्शन बचता है जो मुझे पहले बता देना चाहिए था, लेकिन अब हम समझते हैं। एक फंक्शन आएगा df डॉट कॉलम। देखिए ये क्या करेगा, ये आउटपुट है। इसने क्या किया, देखिए इंडेक्स ने हमको इंडेक्स के नाम दिए। अगर हमारे पास इंडेक्स कुछ नहीं होती तो डिफॉल्ट 0 1 2 आता, लेकिन कॉलम फंक्शन हमको कॉलम के नाम रिटर्न करेगा, और अगर कॉलम के नाम नहीं है तो 0 1 2 आउटपुट रिटर्न करेगा। Okay, so these are the very common functions of the data frame, जो कि सिमिलर है, सिमिलर टास्क है रोज में भी और सीरीज में भी एंड डेटा फ्रेम में। आप कोई भी एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बस केवल ट्रांसपोज जो सीरीज में नहीं था वो यहाँ पर नया है, रेस्ट द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, नेक्स्ट पार्ट में इन माय नेक्स्ट वीडियो we will learn about the dictionary at the data frame slices and some more functions on data frame. But before moving forward, एक फंक्शन हम इसमें याद होगा आपको सीरीज में, वो भी हम देख लेते हैं, दैट इज हेड। तो अगर मैं लिखता हूं हेड 2, सॉरी डीएफ आएगा, डीएफ डॉट हेड 2। ज्यादा लंबी वीडियो में नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, because then student face issue in watching these videos। कई बच्चों के घर में नेट का इश्यू रहता है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा लंबी नहीं जाएंगे, जल्दी फिनिश करते हैं। हेड फंक्शन देखिए टॉप से दो
मैंने 2 लिखा है तो टॉप की 2 रो को इसने रिट्रीव करके दे दिया। और अगर सिमिलर आप लिखते हैं टेल, df डॉट टेल, और अगर आप देते हैं पैरामीटर 1, तो लास्ट की रो को रिट्रीव करके आपको दे देगा, ये देखिए। फाइन, सो दिस इज द आउटपुट। सो हेड, टेल, क्विकली रिव्यू करते हैं, देन विल वाइंड अप टुडेज वीडियो। इंडेक्स फंक्शन आपको इंडेक्स रिटर्न करके देगा। वैल्यूज, इट विल रिटर्न ऑल द वैल्यूज ऑफ डेटा फ्रेम बट इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट, याद रखिएगा। ये यहाँ पर से हम आउटपुट भी देखते चलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लिस्ट, ये रहा आउटपुट। उसके बाद साइज, साइज ने आपको 9 रिटर्न किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न कर रहा है। शेप will return the output in the tuple form, number of rows and column format में आउटपुट आपके पास है। Endim will return the number of dimension, देखिए 2 आई है because the data frame is 2-dimensional data structure, row and column, that's why the output is 2। T stands for transpose, transpose ने देखिए क्या क्या, ये रहा आउटपुट आपके सामने हाईलाइटेड, rows into column कन्वर्ट होके आ गया। and then columns function आपको कॉलम फंक्शन आपको रिटर्न करता है द नेम ऑफ कॉलम इन द डेटा फ्रेम। ओके, द नेम ऑफ कॉलम इन द डेटा फ्रेम, देखिए नेम, क्लास, सिटी, कॉलम आ गया। हेड फंक्शन विल रिट्रीव द टॉप मोस्ट रोज ऑफ डेटा फ्रेम। आप 2 लिखेंगे, 2 आएंगी, 2 रोज आपके सामने देखिए आउटपुट में है। एंड द टेल फंक्शन ने हमने 1 लिखा है तो 1 आपके आउटपुट में यहाँ पे आ रहा है। तो these are the very easy functions similar as series in the form of data frame। फाइन, एग्जाम में क्या आएगा, क्वेश्चन आता है, हम नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम डेटा फ्रेम, ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम सैम्पल पेपर ऑल्सो। एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आपको वो डेटा फ्रेम देगा और फंक्शंस देगा, एंड it will they will ask you the output, how the output will be produced or how the output will be displayed on the screen। Okay, I hope it will help you to understand the concept of data frame। In case of any query, koi problem ho, so please comment, and till then keep learning, keep growing। Thank you so much।